We thank Allah, the Almighty, for His countless blessings, especially for enabling us to conduct this auspicious and glorious program. And may peace and blessings be upon His last and final Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, upon his family and all his companions. Without any further delay, I want to start the program by the recitation of the glorious program customary, which is a divine revelation and guide for all humans. Now, without any further delay, I would like to call upon Brother Maulana Muhammad Sabadal. Please come here and recite the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تعيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد صدق الله العظيم. That moved us all. After that, I want to invite Brother Maulana Muhammad Gadha. Please come here and chant a few couplets of Naat in the praise and the glory of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप अलैहिस्सलाम की शान में कुछ हमारे दोस्त के बनाए हुए अशआर आपकी समाअतों के हवाले करता हूँ। इससे पहले आप अलैहिस्सलाम की शान में नज़रान दुरूद शरीफ का नज़रान अक़ीदत पेश करते हुए अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी अलैहि वसल्लम तस्लीम। फुरक़त में नबी के दीवाने रो रो के गुजारा करते हैं। फुरक़त में नबी के दीवाने रो रो के गुजारा करते हैं। महफिल में मुहब्बत से उनकी हम नात सुनाया करते हैं। महफिल में मुहब्बत से उनकी हम नात सुनाया करते हैं। महफिल में मुहब्बत से उनकी हम नात सुनाया करते हैं। महफिल में मुहब्बत से उनकी हम नात सुनाया करते हैं। महफिल में मुहब्बत से उनकी हम नात सुनाया करते हैं। महफिल में मुहब्बत से उनकी हम नात सुनाया करते हैं। महफिल में मुहब्बत से उनकी हम नात सुनाया करते हैं। महफिल में मुहब्बत से उनकी हम नात सुनाया करते हैं। महफिल में मुहब्बत से उनकी हम नात सुनाया करते हैं। महफिल में मुहब्बत से उनकी हम नात सुनाया करते हैं। महफिल में मुहब्बत से उनकी हम नात सुनाया करते हैं। महफिल में मुहब्बत से उनकी हम नात सुनाया करते हैं। महफिल में मुहब्बत से उनकी हम नात सुनाया करते हैं। महफिल में मुहब्बत से उनकी हम नात सुनाया करते हैं। महफिल में मुहब्बत से उनकी हम नात सुनाया करते हैं। महफिल में मुहब्बत से उनकी हम नात सुनाया करते हैं। महफिल में मुहब्बत से उनकी हम नात सुनाया करते हैं। महफिल में मुहब्बत से उनकी हम नात
ہے ان کی نبوت کی یہ دلیل، ہوتا ہے فلک پر دو ٹکڑے، ہے ان کی نبوت کی یہ دلیل، ہوتا ہے فلک پر دو ٹکڑے، جب چاند کی جانب آقا میرے، جب چاند کی جانب آقا میرے انگلی سے اشارہ کرتے ہیں، فرقت میں نبی کے دیوانے رو رو کے گزارا کرتے ہیں، یہ طفل یتیم عبداللہ بچپن میں ملا تھا جو صدمہ، یہ طفل یتیم عبداللہ بچپن میں ملا تھا جو صدمہ، روتے ہیں نبی اب وا جا کر اور ماں کو پکارا کرتے ہیں، روتے ہیں نبی اب وا جا کر اور ماں کو پکارا کرتے ہیں، کونین ہے جس کے زیر نگی، جس کے لیے دنیا بنائی گئی، کونین ہے جس کے زیر نگی، جس کے لیے دنیا بنائی گئی، دو ماہ اگر چولہا بھی جلے وہ ایسے گزارا کرتے ہیں، دو ماہ اگر چولہا بھی جلے وہ ایسے گزارا کرتے ہیں، جو جا کے اپنی منزل پر لوٹ کے آیا مغرب سے، جو جا کے اپنی منزل پر لوٹ کے آیا مغرب سے، سورج بھی ہے خادم جب اس کو سرکار بلایا کرتے ہیں، سورج بھی ہے خادم جب اس کو سرکار بلایا کرتے ہیں، فرقت میں نبی کے دیوانے رو رو کے گزارا کرتے ہیں، محفل میں محبت سے ان کی ہم نعت سنایا کرتے ہیں، MashaAllah, it was Brother Maulana Muhammad Sahib Gadwi who was reciting the Naat in a beautiful tone. May Allah grant him success. We give red carpet welcome to the respectable chief guest of this certificate distribution program. It means Maulana Abu Bakr Sahib, the president of the popular Madrasa Jamia Aminul Quran Kanpur, and the audience who came for us giving their precious time. May Allah accept their coming here, and my all dear fellows and classmates. After that, firstly, I would like to call upon Brother Maulana Munzir Sahib. Please come here and introduce our Markaz. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable President of today's program, distinguished guests, my fellows, and all the dear audience, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear brethren in Islam, first and foremost, I really deem it an extraordinary privilege for me that by the virtue of Allah, I have been honored with the luckiest chance of briefing you on the introduction to Markaz Education and Research Center on the auspicious occasion of annual program. We are extremely thankful to you for sparing some of your precious time in this regard. Dear dignitaries,
Markaz Rushd needs no introduction. It is one of the most celebrated Islamic institutes in Gujarat, India, catering and imparting quality education to the poor and needy children free of cost. As you are well aware of the fact that Markaz Rushd caters Hifz class to the school students of the locality, wherein about 10 students are guided to memorize the glorious Quran under the strict supervision of the expert teacher. Dear dignitaries, as we know that today the whole Islamic world is passing through dangerous challenges. Hence, sensing the need of the time, the honorable principal of the institute, Hazrat Maulana Sajid Sahab Saadati, opened a faculty in 2019 named Markaz Rushd Education and Research Center, producing 2 years special English course running under the able guidance and profound patronage of Maulana Mahmud Sahab Bardoli. It aims at equipping madrasa graduates with English language and modern technology like diploma computer and internet, with intention that they could find themselves capable to represent Islam and its teaching in a better way in this modern world to the so-called modern educated people. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, it has been so far very successful in producing 2 batches comprising 12 ulama, and at present 11 ulama are under training in first year. Dear audience, it is a bird's eye view of Markaz Rushd, and you are always welcome visit us. Lastly, you are humbly requested to pray for the further progress of the institute, and all the services of the noble institute are bestowed with acceptance of Allah the Almighty. Ameen. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. MashaAllah, it was our good classmate, namely Maulana Munzir Sahab, who gave you the introduction. It means Markaz. Going to ahead, I want to call upon Brother Maulana Nasim Muhammad Sahab. Please come here and tell the activities of this institute. I start my talk with the Islamic greeting. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. I praise be to Allah, the creator of all the worlds, and peace and blessings be upon his Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the head of all messengers, upon his family and all his companions. We thank Allah the Almighty for his countless blessings, especially for enabling us to conduct this auspicious and glorious program. Dear audience, I am going to shed some light on the activities of Markaz Rushd. Request all of you to listen to me carefully. We start our activities by the recitation of the Holy Quran. Every student recites Holy Quran after Fajr Salah. After that, the students raise their hands before Allah and praise for themselves and for development of Markaz and all Islamic institutes, and for all Muslims who are in distress to correct their problems, and for all Muslims who have passed away from this world. Thereafter, the morning assembly is held by the students as student stands and recite the Holy Quran with English translation, and a student stands and recites Holy Hadith with English translation, and a student stands and present latest news, and lastly, a student reads Fazail Amal so that it inspires them to do religious deeds and make them clean and pious. Allah the Almighty has created man and endowed him with an extraordinary quality of speaking and expressing his inner feelings and thoughts. As the Holy Quran says, خَلَقَ الْإِنسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ. He created man, he taught him eloquent speech.
This proven quality has distinguished man other creatures of Allah and gives him a high rank among them. If this quality is polished, surely man can cast a spell over the hearts of million and billion people. Therefore, Markaz Rushd Education and Research Center, established for the sake of imparting and producing authentic preachers, has organized weekly program under the supervision of well-versed, experienced, and sincere teachers to jewel the students excellent qualities of delivering speeches, giving lectures, and if anyone wants to be perfect in any language, they should apply these four rules: reading, writing, listening, speaking, and apply it in their daily routine. And therefore, Markaz Rushd issued World Magazine. The students express their abilities and skills in it. Here I conclude my talk. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. MashaAllah. It was Brother Maulana Nasim Ahmad Sahab Mewan who told you the activities of the students of Markaz. After that, I would like to call upon Brother Maulana Ali Sahab. Please come here and tell the curriculum of this Markaz. Honorable Chief Guest, respected audience, my sincere teacher, and my fellow classmates, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I have an assigned responsibility to introduce the curriculum of our high-class preparatory and modern Islamic educational institute, namely Markaz Rushd Education and Research Center. Dear audience, you all are aware that we live in a multilingual world where connections are now more important than ever. The world is becoming increasingly globalized, and knowing a second language is a must to be acquainted with different cultures, rituals, and information existing in the world. Not only learning any language is child-play, but also a time-consuming endeavor, and especially for those who have graduated from traditional Islamic seminaries and have spent 10 years in madrasas. Considering their background, the curriculum has been designed with the aim of teaching one of the most globally recognized and spoken language, that is English, as well as various computer applications for 2 years with high standard perspective. So let's glance at the curriculum of this education center. It has been recommended that in order to improve student performance and simplify the teaching and learning process, the textbook should be used in institutes, which can play the significant role to polish student skill. That's why the institute has adopted the textbook of nationally accredited organization NCERT. Students are taught NCERT book from class 1 to 12 with perfect and appropriate Urdu translation within 2 years. It is acknowledged that to get full command over a language in terms of speaking or writing, grammar is essential. So we have selected one of the nation's most prestigious publication book for mastering the English language, written by Raymond Martin. Translation studies is a field of studies that offer with theory, description, and usage of other language for comprehension. It can also be defined as an inter-area which touches on different numerous fields such as comparative literature, history, philosophy, science, and so on. Therefore, students in both years, second year and first year, are trained by teaching them the translation of Anglo-Urdu translation with the help of magazines, articles, and newspaper. Moreover, in second year, students are trained by teaching them Arabic translation to convert the verses of the glorious Quran and Prophet saying into English. The main function of the language is the use of language. It gives us the ability to communicate thoughts, belief, and idea with others as quickly as possible. But within that, we can understand language more by looking at its basic function. Teachers make them practice of speaking English, creating the atmosphere. Being Islamic scholars,
making them aware of Islamic terminologies in English used in Arabic language is quite essential. For this purpose, books named Studies in Islam, written by a famous Islamic scholar, Maulana Abdul Aziz Sahab, preferred by a globally recognized mindful renowned scholar, Maulana Ali Sahab Nadir Rahmatullah Alayh, has been introduced in the curriculum. Article writing is considered to be the most effective means to transform our thought, belief, and ideas. Here, students are made capable by making them write lots of articles on religious, current affairs, and technology, and so on. Our basic purpose of teaching English to Islamic scholar is not only to be acquainted with the language, but also to make them capable to advocate the Islamic teaching through this language appropriately. Considering this main purpose, our institute has introduced a Dawah course to teach how to preach Islam among non-believers, how to defend Islam, and how to reply logically to raise questions against Islam without using abusive language. In today's fast-paced digital age, computer skills have become more essential for almost every career. So various computer applications like MS Office, Tally, AutoCAD, CorelDRAW, and PageMaker, and many other applications are taught to students to sustain them with modern age. Besides this facility, students are offered all possible opportunities here to explore their hidden and God-gifted talents, and we students make maximum use of all opportunity provided to us. This small education have granted us wings to fly, so it inculcates the necessary sense of responsibility. All those important skills in us in terms of speaking, writing that current time demands. It teaches us how to explain the area of our service to Islamic throughout the globe single-handedly and collectively. It shows us all possible common platform to establish relations and connection with other communities of the world so that it can help us communicate Islam to them properly. In last, I pray Allah subhanahu wa ta'ala to keep moving forward this institute by leaps and bounds and to save from an evil life. Amin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. MashaAllah, it was Brother Maulana Arif Sahab Islampura who told you the curriculum, it means Nisab-e-Talim of this Markaz. After that, I want to invite Brother Maulana Abdul Hamid Sahab, please come here. Please come on the dais and tell us about computer department which is taught in this Markaz. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Honorable President, respected teachers, and dear friends. Today, I want to say some words about introduction to computer department. Today, experiencing, observing, looking, feeling, considering the needs of the modern time. The computer course is taught us in this Markaz. So I would like to describe the definition of computer. It is a gift packed full of information, intelligence, entertainment, etc. given by advanced technology to us. Today, it not only helps us in the business, media, and the entertainment industries, but also makes the lives of million people easier. As we know very well that the computer is an electronic programmed device that performs multiple tasks including retrieving, calculating, storing information, solving data, and much more. There are numerous computer training institutes and academies that provide quality coaching across India. The second and most important thing is that the personality who teaches us this course. I mean, Mufti Sadi Sahab Saadati
He is an affectionate, well-versed and sincere teacher. When he teaches the computer, really we feel progress, development and confidence in ourselves. MashaAllah, his teaching method is very good and marvelous. And he taught us a lot of program in short time. Mufti Sajid Sahab teaches the computer in MRERC. He teaches DCA, Diploma in Computer Application. It consists of some programs like MS Office, Tele Accounting, Impage, Corel, AutoCAD, Premiere Pro, PageMaker, etc. As well as we are taught computer hardware and how to operate computer system. At last, I pray Allah that may all success touch my all teachers and may they live long and may Allah save them and this institute from enemies and progress this institute. But I want to say some word in Urdu language. ये जो भी पढ़ा गया कंप्यूटर से मुताल्लिक है कि मरकज़ रुश्द एजुकेशन रिसर्च सेंटर इंग्लिश रिसर्च सेंटर के अंदर कंप्यूटर कोर्स भी कराया जाता है और बाकायदा इसकी डिग्री भी यहाँ पर दी जाती है, जैसा कि आज हम उसको अपनी आंखों देखेंगे। कंप्यूटर कोर्स ये जो कराया जाता है तो ये आज के जो हालात है उसको पेश नज़र और मतनाहे नजर रखते हुए इस कोर्स को कराया जाता है ताकि तलबा इसको पढ़कर अच्छी तरीके से दीनी खिदमत भी अंजाम दे सके और अपनी माशी हालत को भी दुरुस्त कर सके कि इसके जरिए हम हर एतबार से दीन की भी खिदमत कर सकते हैं और दुनियावी खिदमत भी अंजाम दे सकते हैं। तो इस कोर्स के जरिए से हमारे लिए दुनिया को समझना बिल्कुल आसान हो जाता है कि हम दुनिया के अंदर किस तरीके से काम करें और किस तरीके से हम दीन को फैला सकें, तो उसके लिए एक आसान सा तरीका है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर माशाअल्लाह तमाम लोग बैठे हुए हैं, गांव के लोग भी हैं और असातिज़ा भी हैं और साथी भी हैं। जाहिर सी बात है हमने यहाँ पर 2 साल गुजारे हैं, 2 साल के अंदर हमारा रहना सहना भी हुआ, मुलाकातें भी हुई और हो सकता है आपस में हमारे किसी वजह से गलतियां भी हुई हो। तो मैं आजिज़ी के साथ अपनी तरफ से माफी चाहता हूँ कि तमाम हज़रात जो यहाँ पर बैठे हुए हैं वो तमाम के तमाम जिनका भी जो भी हक मुझे अदा करने से रह गया हो तो मैं अपनी तरफ से माफी चाहता हूँ कि बराए करम वो माफ कर दें। उसके लिए कुछ अशार है। घड़ी ये अलविदा की है बिछड़ना लाजमी ठहरा, घड़ी ये अलविदा की है बिछड़ना लाजमी ठहरा, फजाए दोस्तां को अब बदलना लाजमी ठहरा। हमें ऐसे बिछड़ना है कि गोया कल भी मिलना है, लगाकर हाजिरी चिपके निकलना लाजमी ठहरा। किसी रास्ते पे मिल जाए किसी मंजिल पे मिल जाए, किसी रास्ते पे मिल जाए किसी मंजिल पे मिल जाए, बशर्ते जिंदगी ए दोस्त मिलना लाजमी ठहरा। यही लम्हा दिलों पर बारहा पहले भी गुजरा है, मगर वक्त जुदाई दिल मचलना लाजमी ठहरा। कहीं जज्बात में ए दोस्त खुदा हाफिज न कह देना, कहीं जज्बात में ए दोस्त खुदा हाफिज न कह देना, तकाज़ा है ये मजलिस का संभलना लाजमी ठहरा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। MashaAllah, it was brother Maulana Abdul Hamid Sahab Rajasthan who told you about computer department. MashaAllah, may Allah progress everyone. Lastly, I would like to request to our good fellow and classmate, it means Maulana Rizwan Sahab Bihar. Please come here, please come on the dais and give our last farewell words. It means Alvidai Kalimat. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد.
قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم. معزز اساتذہ کرام، مہمانان اعظام اور گلشن رشد کے اندلیبوں، یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں، یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں سب اپنی اپنی بولیاں بول کر اڑ جائیں گے. میں آج کی اس الوداعی تقریب میں آپ حضرات کی خدمت میں چند قلبی تاثرات اور بیتے دنوں کے چند احساسات و جذبات پیش کر رہا ہوں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ حزن و ملال اور مسرت و شادمانی کے ملے جذبات میرے ذہن و دماغ پر طاری ہیں. حضرات، مسرت و شادمانی تو اس لیے ہے کہ اب میں اور میرے یہ رفقا اس مادر علمی سے نصاب تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنے اپنے گھر کی جانب رفتے سفر باندھ رہے ہیں، اور حزن و ملال اس وجہ سے ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ جب وہ کسی کے ساتھ کچھ ایام اور شب و روز بسر کر لیتا ہے تو اس کو اس سے انسیت اور قلبی تعلق ہو جاتا ہے، اور جب جدائی اور مفارقت کی گھڑی آتی ہے تو دل غمزدہ ہو جاتا ہے، آنکھیں اشکبار اور دل کی ترجمان بن جاتی ہیں. اور اس عالم رنگ و بو کا دستور بھی یہی ہے کہ کسی کو کسی کی دائمی صحبت نصیب نہیں ہوتی، بلکہ ہر ملنے والے ایک دن بچھڑتے ہیں اور جسموں کے فاصلے بڑھ جاتے ہیں، لیکن ان کی یادیں اور ان کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات روز و شب قلب و دماغ کے پردے پر ہمیشہ ہمیش کے لیے حسین یادوں کی دل فریب اور دیدہ زیر تصویریں نقش کر جاتے ہیں جو کبھی محو نہیں ہوتی. ہمارا ساتھ بہت طویل رہا، جس کی وجہ سے قلب و دماغ کے صفحے پر بہت سارے خوشگوار یادیں اور باتیں نقش ہیں. یہاں سے رخصت ہونے کے بعد ہماری ملاقاتوں کی وہ بے تکلف محفلیں بہت یاد آئیں گی اور دل کو تڑپا جائیں گی. اس وقت میرے زبان و قلم میں اتنی طاقت نہیں کہ میرے دلی جذبات و کیفیات کی ترجمانی کر سکیں، لیکن حکم کی تعمیل میں اختصار کے ساتھ اپنے کچھ تاثرات و احساسات پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. انسان کا دل بے شمار خواہشوں، تمناؤں اور آرزوؤں کا گہوارہ ہوتا ہے، اور ہر خواہش کی تان کسی دوسری خواہش پر جا کر رکتی ہے. بچپن میں جلد جوان ہونے کی خواہش جوانی میں نہ ختم ہونے والے خواہشوں کا ایک تانتا بن جاتا ہے. بیماری میں فوری صحت یابی کی خواہش، تندرست ہونے پر یہ شوق سوار رہتا ہے کہ جسم میں طاقت مزید بڑھ جائے. صحت موجود ہو تو دولت و ثروت کی لالچ و طمع دامنگیر ہوتی ہے. اگر مال اکٹھا ہو تو اولاد کی تمنا دل کو مضطرب و بے قرار رکھتی ہے. الغرض ہر خواہش کی کسی دوسری خواہش کا پیش خیمہ ہوتی ہے، لیکن ہر کسی کو زندگی میں ایک یا ایک سے زائد مرتبہ ایسا موقع ضرور ملتا ہے کہ خواہش اور حالات آمنے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. چاہت اور حقیقت کا تصادم شروع ہو جاتا ہے اور انسان مجبور ہوتا ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے. آج میں اور میرے تمام احباب ایسے دو راہوں پر کھڑے ہیں. دل چاہتا ہے کہ اپنی گلیوں میں شام کریں، لیکن ستم گرے حالات کا اصرار ہے کہ رفتے سفر باندھ یہاں کا میلہ ختم ہوا. بڑی سچی بات کہی ہے انسانی نفسیات کا گہرا مشاہدہ رکھنے والے مولانا ابوالکلام آزاد نے کہ ہماری دلی تمنا کا اثر ہمارے ارد گرد کے ماحول پر پڑتا ہے. اگر ہم خوش ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے ارد گرد کی تمام چیزیں فرحت و مسرت میں ڈوبی نظر آتی ہیں. اگر ہم رنجیدہ ہوتے ہیں تو پوری کائنات پر افسردگی و پسماندگی کی چادر تان جاتی ہے. ہمارے اندرون کی ویرانی کا اثر پورے ماحول کو سوگوار اور ویران بنا دیتا ہے. آج ہم اس چہار دیواری سے رخصت ہونے کو ہیں تو مرکز الرشد کے در و دیوار سے الوداع اور الفراق کا نعرہ بلند ہو رہا ہے. حضرات، کون اپنے والدین کی انگلی کو چھوڑنا چاہتا ہے جسے پکڑ کر اس نے چلنا سیکھا ہے؟ کون اس وطن سے جدائی پر خوش ہوتا ہے جس کی محبت اس کے رگ و ریشے میں لہو کی طرح دوڑتی ہے؟ اس چشمے صافی کو چھوڑنا کون پسند کرے گا جس سے اس نے مدتوں پیاس بجھائی ہو؟ اساتذہ اکرام کی شفقت بھری نگاہوں سے اوجھل ہونا اور ان کے دامن رحمت سے جدا ہونا، دوستوں کی دوستی، رفقا کی رفاقت اور بھائیوں کی اخوت سے الگ ہونا کسے گوارا ہو سکتا ہے؟
मगर इसके बगैर अब चारा भी नहीं। शायर कहता है, कुछ सोच कर ही हुआ हूँ मौज दरिया का हरीफ, कुछ सोच कर ही हुआ हूँ मौज दरिया का हरीफ, वरना मैं भी जानता हूँ आफियत साहिल में है। अजीज दोस्तों, 2 साल का अरसा पूरी आजादी और बेफिक्री इंतहाई जिंदादिली के साथ गुजारा। आज रुखसती इसी मरकज रुश्त से हो रही है, जिसके चप्पे चप्पे की उल्फत और वसीयत, चमन नाज़िमी के गोशा गोशा की मोहब्बत और अकीदत को अलविदा कहने के लिए हम तमाम रफीक दर्स जमा हैं। रुखसत के वक्त हमारी क्या कैफियत है, न कलम से लिख सकते हैं और न जबान से उसका इजहार किया जा सकता है। इन कैफियत का सिर्फ और सिर्फ एहसास किया जा सकता है। आंखें अश्कबार हैं और हमारे क़ुलूब सवार अल्फाज गले में आकर रुक रहे हैं। हम भीगी पलकों और आबदीदा नजरों से इन दरो दीवारों को तक रहे हैं। यहाँ की खुशनुमा दरसगाहों को बेताब निगाहों से देख रहे हैं। दुज़दीदा नजरों से अपने रईस से गिरामी तमाम असातिज़ा और अपने तमाम अहबाब और रफ़ाक़ा को देख रहे हैं। अपने मुश्किल असातिज़ा और यहाँ की तामीर और तरक्की में शरीक रफ़ाक़ाए किराम की तरफ से कभी रश्क और कभी पशेमानी के साथ हमारी निगाहें उठ रही हैं कि कैसे इन्हें छोड़ कर जाए, यहाँ के दरो दीवार को और यहाँ के साथियों को कैसे छोड़े। ये सोचकर सीने में एक खौफ सी उठती है। शायर कहता है, तुझसे मिलकर हमें रोना था, बहुत रोना था, तुझसे मिलकर हमें रोना था, बहुत रोना था, तंगी वक्त मुलाकात ने रोने न दिया। अजीज दोस्तों, हम रफीक दर्स ने इस इदारे में जो वक्त गुजारा, सुबह शाम की जिन हसीन और यादगार सातों में हमने साथ ली, वो यकीनन हम सब की जिंदगी के हसीन और खूबसूरत पल थे जो गुजर गए। लेकिन हम जहाँ कहीं रहेंगे, यहाँ गुजारे हुए रोज़ो शब, यहाँ के बामदर, यहाँ की फिजा में ये सब यादों का बेशकीमत सरमाया होंगे। और हमने अपने असातिज़ा किराम की सुहबतों में रहकर जो इल्म हासिल किया, फिक्र और फन की जिन वादियों को सैर किया, और यहाँ से हमने अखलाकियात, गर्मी क़ल्ब व जिगर, सूज़ व साज़ और आला अक़दार और रिवायात को जो दर्स लिया, दुआ करें कि वो हमेशा हमारी जिंदगी में हमारे लिए मशअले राह साबित हो। इसकी कदर व कीमत को हम वक्त महसूस करें और उस एहसास के अमली नतीजे की शक्ल में हमारी ज़ात, हमारे ख़ानदान, हम वतनों, हमारे रफ़ाक़ा, हमारे समाज, सोसाइटी और पूरी इंसानियत के लिए रोशनी का मीनार और दानिशमंदी का बुलंद वाला सुतून साबित हो। बारी ताला हम सबको इसके लिए कबूल फरमाए, आमीन। आज जबकि हम सब की जुदाई का वक्त आ पहुंचा है, हमें इस बात के एतराफ़ में कोई झिझक नहीं कि मैं आप में से हर एक शख्स का, हम में से हर एक के साथ हर दर्जा उल्फत व मोहब्बत से भरपूर और खुलूस आमेज रवैया रहा, और आप तमाम की जानिब से शफ़क़त और मुरब्बत और मुआमलत का मामला रहा। हम सब आपके उन एहसानात और पुरखुलूस ताल्लुकात के लिए हमेशा शुक्रगुजार और ममनून रहेंगे। लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप हमारी तरह सिर्फ वक्त गुजारी ना करें, आप यहाँ के माहौल की कमा हक़ व कदर करें और अपने अंदर किताबी और ज़बान व बयान की सलाहियत, आला अखलाक व किरदार, पाकीज़ा सीरत और यकीन महकम पैदा करें। याद रहे कि जिंदगी जोहद मुसलसल से इबारत है। अगर मेहनत ना की गई तो ज़िल्लत और रुसवाई मुक़द्दर होगी। इसलिए जी जान से मेहनत करें, असातिज़ा व मदरसा की एक एक चीज़ की कदर करें और अपने अंदर मुमिनाना सिफ़ात पैदा करें। यही वक्त का तकाज़ा और ज़माने की पुकार है। हम गुनाहगार भी बारगाह एज़दी में हम वक्त दुआ गो रहेंगे कि आप जहाँ रहें, कामयाबी व कामरानी हर मोड़ पर आपके कदम चुमे, और जहाँ जाए आपके इल्म नज़र, बुलंद वाला अखलाक व सिफ़ात और रोशन किरदार की खुशबू से गुबारे रात मुश्कबात और अतरबेज़ हो जाए। जुदाई की इस घड़ी में शायर की ज़बानी यही कहते हैं, यार गम हिजरा में इतना तो किया होता, यार गम हिजरा में इतना तो किया होता, जो हाथ जिगर पर है वो दस्ते दुआ होता। आखिर में मेहमान इल्मी के मुअस्सिस व रईस, मेहमान नस्ल नौ हज़रत मौलाना व मुफ्ती साजिद साहब सादती हफ़िज़हुल्लाह, जिनकी रिजाल साजी व आदमगिरी, इंसानियत की मसीहाई व चारासाजी, कौम मिल्लत की रहनुमाई व दस्तगीरी और दीनी व इस्लामी खिदमत की हमागिरी व गिराबारी का हकीकत आमेज व फर्क रसा शोहरा नक्शे दवाम हासिल कर चुका है, जो बाद समूम के थपेड़ों और नुक्ता चीनियों की परवाह किए बगैर सैले रवा की मानिंद आपका काम जारी है। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है, हवा है वो तुंद व तेज, लेकिन चराग अपना जला रहा है।
हवा है वो तुम दो तेज, लेकिन चराग अपना जला रहा है वो मर्द दुर्वेश जिसको हक ने दिए हैं अंदाज खुसरवाना। मुअज़्ज़ज़ सामीन और साथ नीज जुमला असातिज़ा इकराम, कारकुनान, यहाँ के जर्रे जर्रे और दरोबाम का जिनसे किसी तरह भी हम रफीक दर्स को फैज़ पहुंचा है, उनका बेहद ममनून और मशकूर है कि उन्होंने सलाहियतों को जिला बख्शने में कलीदी किरदार अदा किया। अल्लाह ताला अपनी शायान शान बेहतरीन बदला इनायत फरमाए। मेरी तकमील में शामिल है कुछ तेरे हिस्से, मेरी तकमील में शामिल है कुछ तेरे हिस्से, हम अगर तुझसे ना मिलते तो अधूरे रहते। और साथ साथ अपने तमाम असातिज़ा, कारकुनान और अहबाब और रफ़ाक़ा की खिदमत आलिया में अर्ज़ गुज़ार हूँ कि अगर आपको हम रफ़ीक़ दर्स की ज़ात या अमल से तकलीफ हुई हो, और यकीनन हुई है, तो हम सब सिर्फ दिल से अपनी तमाम गलतियों, कोताहियों और लग़ज़िशों पर नादिम और शर्मिंदा हैं और माफ़ी के तलबगार हैं। आप हम सब के साथ अफ़्व दरगुज़र और मोहब्बत और शफ़क़त का मामला फरमाए। अल्लाह ताला आपको इसका बेहतरीन बदला इनायत फरमाएगा इंशाअल्लाह। खता का पुतला हूँ माफ़ी चाहता हूँ, खता का पुतला हूँ माफ़ी चाहता हूँ, अर्श वाले से भी फर्श वालों से भी। हजरात, आखिर में इन अल्फाज के साथ रुखसत होता हूँ कि ऐ मादरे इल्मी, तेरी शफ़क़त के आगे सारी दुनिया की आसाइशें और लज़्ज़तें हेज हैं। हम सब तेरे लिए यही दुआ करते हैं कि तू हमेशा सलामत रहे, अग़यार की रेशा दवानियों और दुश्मनान इस्लाम की चीरा दस्तियों से महफूज रहे। और अल्लाह ताला तेरे जिम्मेदारान, असातिज़ा और तलबा को गोशे आफियत में रखे और तेरे फारिग़ तहसील बेटों से दीन की नश्र व इशाअत का काम लेता रहे और दुनिया में तेरा नाम तरक्की करता रहे। सिलसिले का नाम दराज हो गया, जी तो नहीं चाहता था कि ये सिलसिला खत्म हो, लेकिन वक्त इस बात की इजाजत नहीं देता, लिहाजा मैं अशआर को जुदा होता हूँ। दोस्तों अब कब मिलेंगी दर्स की नूरानियाँ, दोस्तों अब कब मिलेंगी दर्स की नूरानियाँ, याद आएंगी मुझे अब तुम सब की कुर्बानियाँ। अलविदा कैसे कहूँ कहना किसे मंजूर है, अलविदा कैसे कहूँ कहना किसे मंजूर है, फिर भी कहना पड़ रहा है, दिल मेरा मजबूर है। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व